will be also introduced to provide support for operations. Carbon capture, utilization and storage. Aligning with the roadmap launched in December 2025, the carbon capture, utilization and storage technologies at scale will achieve higher readiness and in end-use application across 5 industrial sectors, including power, steel, cement, refineries, and chemicals. An outlay of 20,000 crore is proposed over the next 5 years for this purpose. City economic regions. Cities are India's engines of growth, innovation, and opportunities. We shall now focus on Tier 2, Tier 3 cities, and even temple towns, which need modern infrastructure and basic amenities. This budget aims to further amplify the potential of cities to deliver the economic power of agglomerations by mapping city economic regions based on their specific growth drivers. An allocation of 5,000 crore per CER over 5 years is proposed for implementing their plans through a challenge mode with a reform-cum-result-based financing mechanism. In order to promote environmentally sustainable passenger systems, we will develop 7 high-speed rail corridors between cities as growth connectors, namely Mumbai to Pune, Pune to Hyderabad, Hyderabad to Bengaluru, Hyderabad to Chennai, Chennai to Bengaluru, Delhi to Varanasi, Varanasi to Siliguri. Financial sector. The Indian banking sector today is characterized by strong balance sheet, historic highs in profitability, improved asset quality, and coverage exceeding 98% of villages in the country. At this juncture, we are well to realistically evaluate the measures needed to continue on the path of reform-led growth of this sector. I propose setting up a high-level committee on banking for Vikasit Bharat. High-level committee on banking for Vikasit Bharat to comprehensively review the sector and align it with India's next phase of growth, while safeguarding financial stability, inclusion, and consumer protection. The vision for NBFCs for Vikasit Bharat has been outlined with clear targets for credit disbursement and technology adoption in order to achieve scale and improve efficiency in the public sector NBFCs. As a first step, it is proposed to restructure the Power Finance Corporation and Rural Electrification Corporation. I propose a comprehensive review of the foreign exchange management non-debt instruments rules to create a more contemporary, user-friendly framework for foreign investments consistent with India's evolving economic priorities. Corporate bond market. I propose to introduce a market-making framework with suitable access to funds and derivatives on corporate bond indices. I also propose to introduce total return swaps on corporate bonds. Municipal bonds. To encourage the issuance of municipal bonds of higher value by larger cities, I propose an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance. 100 crore rupees for a single bond issuance of more than 1,000 crore. The current scheme under Amrit which incentivizes issuances up to 200 crores only,
will also continue to support smaller and medium towns. That will also continue to support the smaller and medium towns. Ease of doing business. Individual persons resident outside India, PROI, will be permitted to invest in equity instruments of listed Indian companies through the Portfolio Investment Scheme. It is also proposed to increase the investment limit for an individual PROI under the scheme from 5% to 10%, with an overall investment limit for all individual PROIs to 24% from the current 10%. Emerging technologies including AI. 21st century is technology-driven. Adoption of technology is for the benefit of all people. Farmers in the field, women in STEM, youth keen to upskill, and Divyangjan to access newer opportunities. The government has taken several steps to support new technologies through AI Mission, National Quantum Mission, Anusandhan National Research Fund, and Research and Development and Innovation Fund. Our second kartavya is to fulfill aspirations and build capacities. Close to 25 crore individuals have come out of multi-dimensional poverty through a decade of our government's sustained and reform-oriented efforts. Our government has therefore decided to place a renewed emphasis on the service sector to provide a pathway to fulfilling aspirations of a youthful India with the following measures. I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises standing committee to recommend measures that focus on services sector as a core driver of Vikasit Bharat. This will make us a global leader in services with a 10% global share by 2047. The committee will prioritize areas to optimize the potential for growth, employment, and exports. They will also assess the impact of emerging technologies, including AI, on jobs and skill requirements and propose measures thereof. To create a range of skilled career pathways, a new range of skilled career pathways for our youth, I propose interventions in the following sectors. Health. Existing institutions for allied health professionals will be upgraded and new AHP institutions established in private and government sectors. This will cover 10 selected disciplines, including optometry, radiology, anesthesia, OT technology, applied psychology and behavioral health, and add 1 lakh AHPs over the next 5 years. A strong care system covering geriatric and allied care services will be built. A variety of NSQF-aligned programs will be developed to train multi-skilled caregivers, combining core care and allied skills such as wellness, yoga, and operation of medical assistive devices. In the coming year, 1.5 lakh caregivers will be trained. Hubs for medical value tourism. To promote India as a hub for medical tourism services, I propose to launch a scheme to support states in establishing 5 regional medical hubs in partnership with the private sector. These hubs will serve as integrated healthcare complexes that combine medical, educational, and research facilities. They will have Ayush centers,
medical value tourism facilitation centers, and infrastructure for diagnostics, post-care, and rehabilitation. These hubs will provide diverse opportunities, job opportunities for health professionals, including doctors and AHPs. Ancient Indian yoga, already respected in several parts of the world, was given a mass global recognition when Honorable Prime Minister took it to the UN. Post-COVID, Ayurveda gained a similar global acceptance and recognition. Exporting quality Ayurveda products helps farmers who grow the herbs and youth who process the products. To meet growing global demand, a few more steps are being taken. I propose to 1. Set up 3 new All India Institutes of Ayurveda. 2. Upgrade Ayush pharmacies and drug testing labs for higher standards of certification ecosystem and make available more skilled personnel. 3. Upgrade the WHO Global Traditional Medicine Center in Jamnagar to bolster evidence-based research, training, and awareness for traditional medicine. Animal husbandry. Livestock contributes to close to 16% of farm income, including of poor and marginal households. To scale up availability of veterinary professionals by more than 20,000, I propose to roll out a loan-linked capital subsidy support scheme for establishment of veterinary and para-veterinary colleges, veterinary hospitals, diagnostic laboratories, and breeding facilities in private sector. Collaboration between Indian and foreign institutions will also be facilitated. Orange economy. India's animation, visual effects, gaming and comics sector, ABGC sector, is a growing industry projected to require 2 million professionals by 2030. I propose to support the Indian Institute of Creative Technologies, Mumbai, in setting up ABGC content creator labs in 15,000 secondary schools all over the country and 500 colleges. The Indian design industry is expanding rapidly, and yet there is a shortage of Indian designers. I propose to establish, through Challenge Route, a new National Institute of Design to boost design education and development in the eastern region of India. Education. Our government will support states through Challenge Route in creating 5 university townships in the vicinity of major industrial and logistics corridors. These planned academic zones will host multiple universities, colleges and research institutions, skill centers and residential complexes. In higher education, STEM institutions, prolonged hours of study and laboratory work pose some challenges for girl students. Through VGF, viability gap funding and capital support, 1 girls' hostel will be established in every district. To promote astrophysics and astronomy via immersive experiences, 4 telescope infrastructure facilities will be set up or upgraded. The National Large Solar Telescope, the National Large Optical Infrared Telescope, the Himalayan Chandra Telescope, and the Cosmos 2 Planetarium. Tourism. The tourism sector has the potential to play a large role in the employment generation,
forex earnings, and expanding the local economy. I propose to set up a National Institute of Hospitality by upgrading the existing National Council for Hotel Management and Catering Technology. It will function as a bridge between academia, industry, and government. I also propose a pilot scheme for upskilling 10,000 guides in 20 iconic tourist sites through a standardized, high-quality, 12-week training course in hybrid mode in collaboration with the Indian Institute of Management. A national destination digital knowledge grid will be established to digitally document all places of significance, cultural, spiritual, and heritage. This initiative will create a new ecosystem of jobs for local researchers, historians, content creators, and technology partners. India has the potential and opportunity to offer world-class trekking and hiking experience. We will develop ecologically sustainable mountain trails in Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Jammu Kashmir. Also in Araku Valley in the Eastern Ghats and Podigai Malai in the Western Ghats. Turtle trails along key nesting sites in the coastal areas of Odisha, Karnataka, and Kerala. And 3 bird watching trails along the Pulikat Lake in Andhra Pradesh, Tamil Nadu. It's on the border. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, we established the International Big Cat Alliance in 2024. This year, India is hosting the first ever Global Big Cat Summit, where heads of governments and ministers from 95 range countries will deliberate on collective strategies for conservation. Heritage and culture tourism. I propose to develop 15 archaeological sites, including Lothal, Dolavira, Rakhi Gadi, Adichanallur, Saranath, Hastinapur, and Leh Palace into vibrant experiential cultural destinations. Excavated landscapes will be open to the public through curated walkways. Immersive storytelling skills and technologies will be introduced to help conservation labs, interpretation centers, and guides. The sports sector provides multiple means of employment, skilling, and job opportunities. Taking forward the systematic nurturing of sports talent, which is set in motion through the Khelo India program earlier, I propose to launch a Khelo India mission to transform the sports sector over the next decade. The mission will facilitate an integrated talent development pathway supported by training centers, which are foundational, intermediate, and elite levels. B, systematic development of coaches and support staff. C, integration of sports science and technology. D, competitions and leagues to promote sports culture and provide platforms. And E, development of sports infrastructure for training and competition. Our third Kartavya aligns with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas towards Vikasit Bharat. This requires targeted efforts for 1, increasing farmer incomes through productivity enhancement and entrepreneurship, with special attention to small and marginal farmers. And high-quality assistive devices. C, empowering the vulnerable to access mental health and trauma care. D, focus on the Purvodaya states and the Northeast region
to accelerate development and employment opportunities. Fisheries. We will undertake initiatives for integrated development of 500 reservoirs and Amrit Sarovars. 2. Strengthen the fisheries value chain in coastal areas and enable market linkages involving startups and women-led groups together with fish farmer producer organizations. Animal husbandry. To provide quality employment opportunities in rural and peri-urban areas, we will support the animal husbandry sector in entrepreneurship development through A credit-linked subsidy program, B, scaling up and modernization of livestock enterprises, C, enhanced creation of livestock, dairy and poultry, enhanced creation of livestock, dairy and poultry-focused integrated value chains, and D, encourage creation of livestock farmer-producer organizations. High-value agriculture. To diversify farm outputs, increase productivity, enhance farmers' incomes, and create new employment opportunities, we will support high-value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts, and pine nuts in our hilly regions. All of them will be supported. India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. A dedicated program is proposed for Indian cashew and cocoa to make India self-reliant in raw cashew and coconut production and processing, enhance export competitiveness, and transform Indian cashew and Indian cocoa into premium global brands by 2030. Sandalwood. Sandalwood is closely linked to India's social and cultural heritage. Our government will partner with state governments to promote focused cultivation and post-harvest processing to restore the glory of the Indian sandalwood ecosystem, to rejuvenate old, low-yielding orchards, and expand high-density cultivation of walnuts, almonds, and pine nuts. We will support a dedicated program to enhance farmer incomes and in bringing value addition by engaging youth. Bharat Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. She Marts for rural women-led enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. Empowering Divyangjan. Divyangjan Kaushal Yojana. Information technology, AVGC sectors, hospitality and food and beverages sectors,
often offer task-oriented and process-driven roles which are suitable for Divyangjan. We will ensure dignified livelihood opportunities through industry-relevant and customized training specific to each Divyangjan group. Divyang Sahara Yojana, timely access to high-quality assistive devices for all eligible Divyangjan is a fundamental need. I propose to 1. Support the Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India, Alimco, to set up and to scale up production of assistive devices, invest in R&D and AI integration, strengthen PM Divyasha Kendras, and support setting up of assistive technology marts as modern retail style centers where Divyangjan and senior citizens can see, try and purchase assistive products. Reaffirming our commitment to mental health and trauma care. There are no national institutes for mental health care in North India. We will therefore set up a NIMHANS 2 and also upgrade national mental health institutes in Ranchi and in Tezpur as regional apex institutions. Emergencies expose families, particularly the poor and vulnerable, to unexpected expenditure. We will strengthen and increase these capacities by 50% in district hospitals by establishing emergency and trauma care centers. Focus on Purvodaya states and northeastern regions. Purvodaya, I propose the development of an integrated East Coast industrial corridor with a well-connected node at Durgapur, creation of 5 tourism destinations in 5 Purvodaya states, and the provision of 4,000 e-buses. Buddhist sites in northeastern region. The northeastern region is a civilizational confluence of Theravada and Mahayana or Vajrayana traditions. I propose to launch a scheme for development of Buddhist circuits in Arunachal Pradesh, Sikkim, Assam, Manipur, Mizoram and Tripura. The scheme will cover preservation of temples and monasteries, pilgrimage interpretation centers, connectivity and pilgrim amenities. 16th Finance Commission. On 17th November 2025, the 16th Finance Commission submitted its report to the President. As mandated under Article 281 of the Constitution, the government is to lay the report along with the explanatory memorandum on the action taken report on the recommendations of the Commission in Parliament, which, Sir, Honourable Speaker, you've allowed me to do at the commencement of this session. The government has accepted the recommendation of the Commission to retain the vertical share of devolution at 41%. As recommended by the Commission, I have provided 1.4 lakh crores of rupees to the states for the year 2026-2027 as Finance Commission grants. These include rural and urban local body and disaster management grants. Fiscal consolidation. Government has been delivering on our fiscal commitments consistently without compromising on social needs. To strive towards accepted standards of fiscal management in Budget 25-26, I had indicated that the central government would target reaching a debt to GDP ratio of 50 plus or minus 1% by 2030-31. In line with this, the debt to GDP ratio is estimated to be 55.6% of GDP in BE 26-27, compared to 56.1% of GDP in RE 25-26.
A declining debt to GDP ratio will gradually free up resources for priority sector lending and expenditure by reducing the outgo on interest payments. One of the main operational instruments for debt targeting is the fiscal deficit. I am happy to inform this august House that I fulfilled my commitment made in 2021-2022 to reduce fiscal deficit below 4.5% of GDP by 25-26. In RE 25-26, the fiscal deficit has been estimated at par with BE of 2025-26 at 4.4% of GDP. In line with the new fiscal prudence path of debt consolidation, the fiscal deficit in BE 26-27 is estimated to be 4.3% of the GDP. The revised estimates of the non-debt receipts are 34 lakh crore rupees, of which the centre's net tax receipts are 26.7 lakh crore. The revised estimate of the total expenditure is 49.6 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 11 lakh crores. Budget estimates 2026 to 2027. Coming to 26-27, the non-debt receipts and the total expenditure are estimated as 36.5 lakh crore and 53.5 lakh crore respectively. The centre's net tax receipts are estimated at 28.7 lakh crore rupees. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.7 lakh crore rupees. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 17.2 lakh crore rupees. I'll now move to Part B. Part B, direct taxes. Honorable Speaker, sir, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in a record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of living. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers, wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer.
for the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with the payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a TAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of taxpayers, namely, A, who did not disclose their overseas income or assets, and B, who disclosed their overseas income and or paid due tax but could not declare the asset acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For category B, asset value is proposed to be up to 5 crore rupees. Here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution. Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. Already, a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions, are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account
and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement, APA, I propose to fast-track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value.
the resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards, IND AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap and minerals, will be rationalized to 2%, and that on tendu leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum alternate tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax, so there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes.
I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take up sector-specific proposals. Promotion of exports of marine, leather, and textile products. I propose to increase the limit for duty-free imports of specified inputs used for processing seafoods for export from the current 1% to 3% of FOB value of the previous year's export turnover. I also propose to allow duty-free imports of specified inputs, which is currently available for exports of leather or synthetic footwear, to exports of shoe uppers as well. I propose to extend the time period for export of final product from the existing 6 months to 1 year for exporters of leather or textile garments, leather or synthetic footwear, and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals. It is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair, or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA.
Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, I propose to exempt basic customs duty on 17 drugs or medicines. I propose also to add 7 more rare diseases for the purposes of exempting import duties on personal imports of drugs, medicines, and food for special medical purposes used in their treatment. Customs process. India's role and share in the global trade is poised for a major leap in line with our ambition and journey towards Vikasit Bharat. In this regard, I propose many measures for custom processes to have minimal intervention for smoother and faster movement of goods and greater certainty to the trade. Trust-based systems. I propose to enhance duty deferral period for Tier 2 and Tier 3 authorized economic operators, known as AEOs, from 15 days to 30 days. I propose to provide eligible manufacturer importers the same duty deferral facility. This should encourage them to get themselves accredited as a full-fledged Tier 3 AEO in due course. To provide greater certainty and for better business planning, I propose to extend validity period of advance ruling binding on customs from the present 3 years to 5 years. In the spirit of the whole of government approach, government agencies will be encouraged to leverage AEO accreditation for preferential treatment in clearing their cargo. Regular importers with trusted long-standing supply chains will be recognized in the risk system so that the need for verification of their cargo every time can be minimized. Export cargo using electronic sealing. Export cargo using electronic sealing will be provided through clearance from the factory premises to the ship. For import of goods not needing any compliance, filing of bill of entry by a trusted importer and arrival of goods will automatically notify customs for completing their clearance formalities. This will enable goods to be released immediately on arrival. The customs warehouse framework will be transformed into a warehouse operator-centric system with a self-declarations, electronic tracking, and risk-based audit. These reforms will move away from the current system of officer-dependent approvals and reduce transaction delays and compliance costs. Ease of doing business. Approvals required for cargo clearance from various government agencies will be seamlessly processed through a single and interconnected digital window by the end of the financial year. Processes involved in clearance of food, drugs, plant, and animal and wildlife products, accounting for about 70% of interdicted cargo, will be operationalized on this system by April 2026 itself. For goods not having any compliance requirement, clearance will be done by customs immediately after online registration is completed by the importer, subject to the payment of duty. Customs integrated system will be rolled out in 2 years as a single integrated and scalable platform for all customs processes. Utilization of non-intrusive scanning with advanced imaging and AI technology for risk assessment will be expanded in a phased manner with the objective to scan every container across all the major ports.
new export opportunities to support Indian fishermen to fully harness the economic value of marine resources beyond our territorial waters, the following measures will be taken. A. Fish catch by an Indian fishing vessel in exclusive economic zone or on the high seas will be made free of duty. Landing of such fish on foreign port will be treated as export of goods. Safeguards will be put in place to prevent misuse during fish catch, transit or transshipment. To support aspirations of India's small businesses, artisans and startups to access global markets through e-commerce, I am pleased to announce complete removal of the current value cap of 10 lakh rupees per consignment on courier exports. In addition, handling of rejected and returned consignments will be improved with effective use of technology for identifying such consignments. I propose to revise provisions governing baggage clearance during international travel to address genuine concerns of passengers. The revised rules will enhance duty-free allowances in line with the present-day travel realities and provide clarity in temporary carriage of goods brought in or taken out. There are honest taxpayers who are willing to settle disputes by paying all their dues, but they get deterred due to negative connotation associated with penalty. They will now be able to close cases by paying an additional amount in lieu of penalty. Honorable Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. One and a half hours. Item number 3, माननीय वित्त मंत्री जी. Item number 2, sir. 3. Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the following statements under Section 3, 1 of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act of 2003. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. Item number 4, माननीय वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I move for leave to introduce the Finance Bill 2026. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इस पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है. माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरे स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. माननीय सदस्यगण, आपको सूचित किया जाता है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की कॉपी पब्लिकेशन काउंटर पर ली जाती है. बजट भाषण और बजट से संबंधित दस्तावेज आपके मोबाइल फोन और मेंबर पोर्टल्स पर ही उपलब्ध है. सभा की कार्रवाई कल सोमवार दिनांक 2 फरवरी 2026 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. केंद्रीय बजेट उपस्थापन कले केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण. जदि कहवा समस्त क्षेत्र को बुझ देवा भली ये बजेट उपस्थापन कराई. प्रथम जदि आम कहवा जिते गृह उपस्थापन करे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तो निहती भाव में सेमी कंडक्टर ठारू आरंभ होती. जदि कहवा घोषणा करागला सेमी कंडक्टर मिशन जेनर्जी 2.0 घरोई विनिर्माण क्षमतार निर्माण, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत, लोकाभिमुखी जगह साधारण लोकों को प्राथमिकता, आर्थिक यात्रा स्थिरता, वित्तीय अनुशासन, सतत विकास एवं नियंत्रित महंगाई द्वारा परिचित होती. बजेट सेमी कंडक्टर क्षेत्र में 10,000 कोटी फंड, टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्टर, 5 लाख अधिक जनबहुल सहर में सरकार इन्फ्रा बूस्ट करेंगे. सेमी
सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन आरंभ उद्योग नेतृत्व रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेंटर जदि आम कहते फोकस बायोफार्मा सेक्टर उपरे बड़ घोषणा भारत वैश्विक बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब कहते अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बायोफार्मा शक्ति योजना प्रस्ताव आगामी 5 वर्ष में 10,000 कोटी प्रावधान 7 रणनीतिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग विस्तार परंपरागत उद्योगर पुनर्जीवन एमएसएमई निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने दीर्घकालीन सुरक्षा स्थिरता मजबूत करने सिटी इकोनॉमी रीजन विकास दिल्ली वाराणसी समेत 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर घोषणा ता सहित जदि आम कह एमएसएमई सेक्टर कथा जदि कह बड़ घोषणा करछंती केंद्र एवं राज्य मिसिकरी उच्चस्तरीय समन्वित गठन करेंगे 200 विरासतर औद्योगिक जो क्लस्टर रही पुनर्जीवित करा एमएसएमई का 10,000 कोटी घोषणा आत्मनिर्भर भारत जो निधि रही 2,000 कोटी घोषणा करा से भाव में जब आम कह ट्रेड्स और एमएसएमई फाइनेंसिंग मजबूत घोषणा करिसेंती ट्रेड्स जरिया एमएसएमई वर्तमान सुधा 7 लाख कोटी अधिक फंडिंग पाई एवं ट्रेड्स जो लेन देन रही ताकू केमिति प्लेटफॉर्म दिया से प्लेटफॉर्म रे ताकू सुधार अणा एवं एमएसएमई बाद जदि आम कह बायोफार्मा कथा कहबा ताहले भारत ग्लोबल हब बनियो बोली कहते केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 5 वर्ष पर 10,000 कोटी व्यवस्था कराई प्रावधान रखाई बायोफार्मा शक्ति योजना नारे बायोलॉजिक्स एवं बायोसिमिलर जो घरोई उत्पादन केमती बढ़ाबो तापर फोकस करा जायछि से भाव में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 रो जो शुभारंभ होती भारतीय आईपी डिजाइन एवं सप्लाई चेन को केमती मजबूत करा फोकस कराई उद्योग आधारित अनुसंधान एवं तार प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करा प्रावधान रखाई बजेट रे इलेक्ट्रोनिक्स बेनिर्माण योजना जो रही लक्ष्य रखा निवेश कराई ता सहित जदि आम कह वस्त्र हाथकर जो घरोई जदि आम कह जोड़ा आम जहाँ कहे कुटीर शिल्प कथा कहे फाइबर सेक्टर कथा तापर फोकस करछंती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण रेशम ता सहित उल एवं जो झोट रही राष्ट्रीय फाइबर योजना कराई पारंपरिक क्लस्टर एवं आधुनिकीकरण उपर गुरुत्व दी जाइए रोजगार योजना वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना दाना घोषणा कराई जहाँकि बुणाकार एवं कारीगर मानक गोटे प्रकार बुस्ट दब हस्तशिल्प कार्यक्रम को आगक नब टेक्स इको को किभली भाव वैश्विक भाव में प्रतिष्ठित करा से योजना कराई वस्त्र कौशल उन्नयन 2.0 ये योजना मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने प्रस्ताव रही बजेट रे ग्रीन इंडस्ट्री और कार्बन जदि आम कह फ्यूचर कथा कहबा ताले औद्योगिक क्षेत्र में कार्बन फ्यूचर एवं तार उपयोग एवं ताको केमती स्थिर रखा जाय परबा ताको केमिति संरक्षण कर रखा जाय परबा सेति पय मध्ये गुरुत्व दे जाय 5 वर्ष में 5 औद्योगिक क्षेत्र में 20,000 कोटी टंकार प्रावधान कर रखा जाय से भली जदि आम कह रेल जलमार्ग एवं ग्रीन ट्रांसपोर्ट पैंका 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर सहर भितर तार विकास केमती हम से सेतु बनब दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनब आगामी 5 वर्ष में 20 नुआ राष्ट्रीय जलमार्ग हम बनारस एवं पाटना जहाज जदि आम कह भितर केमती तार सुविधा कर सामुद्रिक विमान माने VGF योजना तार आरंभ कर आज केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करछंती इंफ्रास्ट्रक्चर केमती रेकर्ड खर्च हम तापर आज प्रावधान रखाई बजेट रे 2026-27 रे पुंजीगत खर्च 12.2 लाख कोटी टंका टायर 2 एवं टायर 3 सहर में ये इंफ्रा को मजबूत करा 5 लाख अधिक आमर मिडिल क्लास को सुविधा मिल आमर स्लैब रेटा टे अधिक बढ़ा सेटा है बट अदरवाइज आप देखा गले इट्स ए ग्रोथ ओरिएंटेड बजेट से बहुत प्रकार स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से प्रपोज करा जाइए तो आम देश को गोटे आमर विकसित भारत आड़ को जमती आम गति करवा धीरे धीरे से हिसाब से तार गोटे चित्र आमको मिल पारी आम ऑलरेडी आम फिस्कल प्रुडेंस भी आम देखा मिली जमती आमर फिस्कल डेफिसिट ए वर्ष 4.3 रही लास्ट आमर फाइनाल 4.4 था एथरक आहरी 4.3 कमे तेणु आमर ग्रोथ स्टोरी सहित फिस्कल प्रुडेंस को ध्यान दि जाइए
तो न्याचुराली जमती प्रति वर्ष आमर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राय सबुठु अधिक एलोकेशन होता है तेणु एक्सपेक्टेड लाइन्स रे एथरक आमर 12.2 लाख करोड़ आम इंफ्रास्ट्रक्चर उपर एलोकेट करा जो थे आम निश्चित भाव भाविया ओडिशा को जे आमको बेनिफिट मिल इन दैट सेंस से स्पेसिफिकली ओडिशा कहते मुझोटा आगुरी भी कही जे आमर इनलैंड वाटरवेज 5 जोटा आमर तालचेर महानदी रे आसिक आमर धामरा और पारादीप को जोड़ से प्रपोजालटा बहुत दिन रू पेंडिंग थिला अप्रूव होगी आउ सेटा को एथरक माने क्लियर कट से एलोकेट करछंती एवं फोकस देछंती देटा गोटे आमर जो आपण मैंने जानती ओडिशा जमती स्टील कैपिटल ऑफ इंडिया मिनरल रिच स्टेट तेणु आर जो मिनरल मूवमेंट आपणकर बहुत बहुत जरूरी आम तापाई अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आम डेवलप करने कारण रोड रे कंजेशन अधिका हो जाऊँगी तेणु आमर रेलवे हो आपणकर इनलैंड वाटरवेज हो ये दुटा ओडिशा को आलोकेशन अधिका आसो एवं सेटा डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन करिसंती तापरे आम जदि देखिबा आमर उत्कल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जोटा फोकस एरिया एमएसएमई सेक्टर पर स्पेसिफिक से कहते विभिन्न इनसेंटिव मेजर्स विभिन्न आउ जोटा कहते एसएमई ग्रोथ फंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ग्रोथ फंड प्राय 10,000 कोटी टंकार से गोटे फंड क्रिएट कर एसएमई को सपोर्ट करने ताको इनसेंटिवाइज करे जमते हम टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कथा कहूँ केमती एसएमई इजियर एंड चीप क्रेडिट केमती से माने पाई परिवे तांको हाथ को लिक्विडिटी आसी परिवो तांको प्रोडक्ट को केमती से माने मार्केट करि पे ता पई जेम जो हमर गवर्नमेंट रो ई मार्केट प्लेस रही ता संगे लिंक करने को से प्रचेष्टा करा जायछि एवं ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हब जमती आगु कही ता पई तांको सब आड़ू सपोर्ट फंडिंग रे इजियर हम टेक्नोलोजी एडॉप्शन मॉडर्नाइजेशन हाँपाई टू स्केल अप देयर प्रोडक्शन तापाई से माने केमती इजियर फंडिंग पाई परिवे इनसेंटिव पाई परिवे तापाई व्यवस्था है कॉर्पस फंड गोटे 10,000 कोटी टंकार भी तैयारी होती एवं तांका प्रोडक्ट को मार्केट करने आहरी सरलीकरण कराई जेम सहित लिंक करी तेणु सहीटा गोटे मेजर से आप देखा गले इंफ्रास्ट्रक्चर आ एसएमई ना आमर एमएसएमई ये दुईटा सेक्टर ओडिशा बहुत इम्पोर्टेंट तापर विशेष ध्यान दि जापर मुझे टूरिज्म टूरिज्म गोटे माइनिंग मेटल सेक्टर को छाड़देला रेस्ट जो आसूँ आमर ओडिशा बेसी जरूरी है टूरिज्म टेक्सटाइल एपरल सेक्टर जो थे कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पार तो टूरिज्म उपरे भी विशेष ध्यान दिज्व बोली फाइनेंस मिनिस्टर डायरेक्टली तापर कहते ओडिशा गोटे स्टेट 4-5टा स्टेट भीतर ओडिशा रही जे फोकस स्पेशल फोकस टूरिज्म ये ऊपर दिज्व गाइड से कहते जो बारे गाइड मान को ट्रेन करा प्राय 10,000 गाइड को ट्रेन करेंगे जो मैंने कि फैसिलिटेट करेंगे टूरिज्म को जो मैंने टूरिस्ट आसवे आमर जो रही आमर ये टूरिस्ट साइट तार ताको एक्सप्लेनेशन करने सुविधा हम ता छड़ा आपणकर टेक्सटाइल क्षेत्र में विभिन्न स्कीम अनाउंस कराई ओडिशा पे सेटा भी लाभदायक हम कारण ओडिशा फोकस करुच्ची टूरिज्म आमर टेक्सटाइल एपरल क्षेत्र में स्पेशली टेक्निकल टेक्सटाइल तापर आमर ऑलरेडी 5टा टेक्निकल टेक्सटाइल पार्क गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर करते तेणु तांको सपोर्ट मिले बजेट रे जो प्रोविजन करा ताकू छाड़देले आपणकर ओडिशा स्पेसिफिक जमती आमर एयर अर्थ ओडिशा रे मिलूँ ब्रह्मपुर रे आम रिच एंड क्रिटिकल मिनरल्स तेणु सी मिनरल्स क्रिटिकल मिनरल्स केमती सहजरे मूव करें आम डिफरेंट सेंटर को तापाई गोटे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी करने कहुई ओवरऑल आम कहवा जे आमर इकोनॉमी को किक स्टार्ट गतिशील करने एवं
इकोनॉमी को आमको भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आड़ को आगे नापी 2047 जो विकसित भारत आम परिकल्पना करें ता पाखरे पहुँचापी यहाँ गोटे उद्यम कराई ता छड़ा आम ओडिशा स्पेसिफिक स्कीम रही आम निश्चित भाव में ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अधिका पुश मिनरल ये माने तांकर जो कंसंट्रेशन तापरे आमर लॉजिस्टिक्स उपरे बहुत वाटरवेज एंड रोड एंड रेलवे नेटवर्क उपर फोकस टूरिज्म उपर फोकस एवं आमर टेक्सटाइल क्षेत्र में फोकस ता छड़ी धरे नेचुरली एग्रीकल्चर उपर तो निश्चित भाव में सरकार का फोकस रही एग्रीकल्चर सेक्टर केमती अधिका जमती गोटे सेमती टेक्नोलोजी लेवरेज करी टेक्नोलोजी यूज करके मल्टी क्रॉप डेवलपमेंट हम आमर लैंड रे जो गोटे सिंगल क्रॉप न होकि आम मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न रे आम जा क्लाइमेट को देखिकी एवं से आम जो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक माने प्रोड्यूस हम ताको केमती आम एक्सपोर्ट करवा तापाई कंटेनर सर्विस को भी ध्यान दिया जाउची केमती कंटेनर सर्विसटा आउरी स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का मामला हो, चाहे वो फिशरी से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो जल मार्ग के बारे में एक तरह से कारखाना से लेकर पूरी तरह जल मार्ग के परियोजना की चर्चा किया है और कई चीजें कैसे मेडिकल कॉलेज मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में आईसीयू और वहां पर पूरा ट्रॉमा सेंटर का यूनिट बनाने का निर्णय लिया है। इसलिए और मैं विस्तार से आपको बात आपके बीच में करूंगा, लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी को धन्यवाद देता हूं कि 2047 के भारत के लिए जो नींव आज उन्होंने रखा है, इसके लिए उनको बधाई देता हूं। मेडिकल आ गोटे जिन टूरिज्म संगे मेडिकल टूरिज्म गोटे हेल्थ सेक्टर को गोटे अधिका ध्यान दिखाई केमती प्राइमरी हेल्थ सेंटर ये आमर रूरल एरिया रे डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लॉक वाइज डेवलप हम एवं से बेटर केयर मिल पार स्पेशलाइज्ड केयर मिल पार भी ध्यान दि जाइए एवं मेडिकल टूरिज्म केमती माने बढ़ावा जो हम लोग की जो इंडस्ट्री की मांग थी वो काफ़ी हद तक पूरी करता है और जो खासकर रिफॉर्म्स में कई सेक्टर्स को फोकस करना, एमएसएमईज को फोकस करना, हर सर्विसेज में भी नया फोकस उन्होंने दिया है और हर एक सोसाइटी के हर एक वर्ग को अलग अलग भागों में कर उनके लिए क्या कर रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छा था। और टैक्स में कई जो चीज़ें थी जो पहले से जो कई चीज़ें जो रेस करी जा रही थी सिंप्लीफिकेशन के लिए वो भी उन्होंने काफ़ी हद तक सॉल्व किया। रेयर अर्थ मिनरल और कैपेक्स बढ़ा दिया है, इस ओवरऑल इसको किस तरह देखते हैं? एक्सपोर्ट को लेके भी काफ़ी फोकस है, एक्सपोर्ट पे फोकस है, रेयर अर्थ पे फोकस है, कैपेक्स भी 1 लाख करोड़ से बढ़ाया है तो वो भी बड़ा अच्छा है क्योंकि पहले भी अगर आप पहले से देखें तो 11 लाख करोड़ भी बहुत नंबर था। अगर आप 4 साल पहले से देखें तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया, तो इस बार और 10-12% से बढ़ाया है। थैंक यू सर। So how do you look at the सरलीकरण को आमर डायरेक्ट टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स दुईटा जगह बहुत गुड़िया जिनस सरलीकरण कर जमती निजे इनकम टैक्स आप विदाउट सपोर्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स किंबा फाइनेंशियल एक्सपर्ट आप निजे आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तापाई सरलीकरण कर अन्य जिनस जोटा आपंकर देखो जो असेसमेंट एंड पेनाल्टी प्रोसीडिंग दुईटा को मर्ज कर दिखाई एका थरके हम सेपरेट न हो भाव में आम गोटे देखा जदि ओवरऑल जो आमर बजेट जहाँ आम उपलब्धि कलु जे एटा गोटे संतुलित बजेट प्रोग्रेसिव बजेट एटा आमको आगु को विकसित भारत एवं समृद्ध ओडिशा हाँपाई निश्चित आमको गति जोगाइब मो वर्तमान माने स्पेसिफिक जदि सेक्टरल इश्यू उपर आप चाहिए आमर अन्य अच्छा पचारि पारे।
total allocation माने in terms of the size of the budget size तो किसी 12 लाख करोड़ टा आपनकर 12.2 लाख करोड़ टा इंफ्रास्ट्रक्चर पर allocation दै चंती जोटा से कहले हाँ हाँ सेतिरे ई बसेस पे हाँ जोटा सी आमर सी प्लेन कथा आमर जोटा देखंतु जोटा आम कहूँ ब्लू इकोनॉमी आमर ओडिशा पे आम जदि सेपरेट आम सेग्रेट करिया मु जंते आगुरु कहिछि ओडिशा रे मिनरल सेक्टर टा हला प्रोमिनेंट सेक्टर व्हिच इज ड्राइविंग द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा ता पई निश्चित भाव में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पुश दिखाई एवं स्पेसिफिकली जो एथर नुआ जिनसटे कराई जो इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करवा सेटा निश्चित भाव में आमको कारण आम 2030-32 सुधा 100 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करिया चाहूँ ताहले हमको 200 मिलियन टन आयरन ओर 200 मिलियन टन कोल मूव करिया पड़ो तेणु तापाई आम कौटी रोड रे कंजेशन हम तापाई रेल नेटवर्क भी हमको डेवलप कर पड़ो स्पेसिफिकली कोल मूव करने हमको महानदी जो आमर तालचेर एरिया आमर इनलैंड वाटरवेज को डेवलप से आगुरी अप्रूव होता एलोकेशन कराई तेणु से गोटे बड़ उपलब्धि एथरक आप डिस्टिंग फ्रॉम अदर इयर्स तेणु से गोटे आमर बड़ उपलब्धि हम जोटा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तापर आमर मिनरल सेक्टर रे आमर जो स्पेसिफिक जो रेयर अर्थ कहते कारण क्रिटिकल मिनरल उपरे सरकार जोर दौरान आ रेयर अर्थ गोटे क्रिटिकल मिनरल से तार यूज रही तेणु ताकू केमती आमर गोटे मूवमेंट करी हब जो कंज्यूमिंग सेंटर गुड़ा को तापाई गोटे कॉरिडोर से कहते तापरे अपन फिशिंग उपरे मध्य जोर देइचंती फिशिंग उपरे तेणु तापर आमको आमर जानते ओडिशा आंध्र प्रदेश पर फिशिंग रे आप मेरीन प्रोडक्ट उपरे द्वितीय राज्य जे कि एक्सपोर्ट मैक्सिमम करे तेणु तापर आपणकर जोर दिखाई एवं टूरिज्म दिखाई से ओडिशा बेनिफिट पाइब एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में जो जोर दिखाई से डायरेक्ट बेनिफिट ओडिशा को आसब तेणु आम देखा गले आमर जो आउ जमती आप जानती ई बस 5000 ई बस से मैंने ईस्टर्न इंडिया रे से मैंने चलैबे तादर ओडिशा पाखक निश्चित भाव में आलोकेशन आसब तो ओभरऑल आम देखा गले आम राज्य ओडिशा एथरक बजेट रे एडिक्वेट प्रोविजन करा जायछि तो आम सबुठ बड़ कथा एमएसएमई को ऊपर विशेष भाव थस दिखाई द्वारा आम निश्चित भाव में भाविया जे आमर ओडिशार जो माने बंधु मान अच्छा एमएसएमई क्षेत्र में से माने निश्चित भाव में तार लाभ पाइबे इन टर्म्स ऑफ गेटिंग चीप एंड स्पीडी फंड्स और लोन्स फ्रॉम द बैंक्स एंड गोटे सेपरेट डेडिकेटेड फंड 10,000 कोटी टंकार कराई एवं तांको मॉडर्नाइज करने से सुविधा आसब एवं तांको एक्सपोर्ट करने जिम सहित जोड़ी दि जाइए तेणु आम देखा गले मुझे कहूँ जे ओडिशा पूरा देशपाई तो निश्चित भाव में यहाँ गति जगैब आम विकसित भारत आड़ को जावाई किंतु ता सहित ओडिशा निश्चित भाव में आमको एथिरे जहाँ जहाँ एथर प्रोविजन कराई जो डिटेल आसो आम जाना बट जहाँ आम चुंबक बुझीचु जे ओडिशा एथरक एडिक्वेट एलोकेशन आसी एवं ओडिशा निश्चित भाव में बेनिफिटेड हम 10 रु आम आपको कहवा 8 नंबर दे परिबा सर को सर balanced manner. For example, it has taken care of the youth, it has taken care of women, taken care of farmers, MSMEs,
semiconductor industry, electronic industry, Ayurveda, our own traditionals, the modern industry as well as our traditional industries. So since Indian Merchants Chambers, IMC Chamber of Commerce and Industry has a focused MSME membership, I would say what I like the most about is the 10,000 crore outlay over a period of 5 years for promoting and helping the MSMEs. So that's the most important point for me. The second one is the India Semiconductor Mission 2.0 and Philip to the electronic component manufacturing, and there the outlay of 40,000 crore. These two. The third one is Biopharma Shakti. So Biopharma Shakti, there is an outlay of 10,000 crore. Then I would say the fourth point is mineral rich states, particularly, the dedicated rare earth corridor is being set up. That's an extremely important initiative. 5 is for decarbonization. All of us are suffering from the environmental catastrophes and all. So for decarbonization, the carbon capture and carbon utilization, 20,000 crore outlay has been given. Then capital expenditure of 12.2 lakh crore, which is a major initiative. And then we have women empowerment, because the women she-marts are being opened. So that's important one. And then I would say municipal bonds for ease of living in large cities. Municipal bonds can be raised. That will be important. And most importantly, fiscal deficit has been contained to 4.4% for 25-26 and 4.3% for 26-27. And custom duties have been rationalized. So these are my 10 points which are positive, big picture points for union budget for 25-26. So after union budget, market is down, BSE Sensex is down around 1700. What do you say? So I am not too much overly worried about the market going down in short term. It's largely because of the STT. And I think overall when the positive points of the budget will seep into the minds of various traders and all, market will take care of itself. So, but that's not the real objective of the budget, I would say. So किस तरह से बजट को देखेंगे? अब बजट पेश किया गया है, तो बजट पेश किया गया, मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है और इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्योंकि इसमें यूथ का ध्यान रखा गया है, हमारे यहाँ की महिलाओं का ध्यान रखा गया है, हमारे किसान भाइयों का ध्यान रखा गया है, और ख़ास करके जो MSMEs हैं, जो हमारे इंडस्ट्री की रीढ़ की हड्डी कही जाती है, जहाँ 45% सप्लाई जो है MSME से आता है, इन सब का ध्यान रखा गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी नई टेक्नोलॉजीज जो हैं, सेमीकंडक्टर हुआ, रेयर अर्थ के रिलेटेड हो रहे हैं, तो उसमें जो आउटलेस दिए गए हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ हमारे भारत की जो ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ है आयुर्वेदा वगैरह, उसके अंदर भी आउटले बढ़ाया गया है। तो मिला जुला के ये बहुत अच्छा बजट है। बजट आने के बाद मार्केट नीचे गई है, 1700 पॉइंट डाउन हुई है, क्या? मैंने जैसा कहा कि मार्केट का ऊपर नीचे होना बजट से डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं कहा जा सकता है, बट खास करके STT के ऊपर कोई बजट के अंदर अनाउंसमेंट नहीं है, शायद उसका ये रिएक्शन है। बट जब 1 या 2 दिन के अंदर मार्केट में इस बजट की अच्छाइयों का पता चलेगा तो मार्केट अपने आप उसका ध्यान रख लेगा। धन्यवाद। निर्मला सीतारमण 2026-27 आर्थिक वर्ष पर नवम केंद्रीय बजेट को उपस्थापन कर सारी। बजेट रे राजकोषीय घाट 4.3% रखा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख रखा। बजेट रे करदाता, निवेशक, कृषक, मध्यम वर्ग, उद्योग क्षेत्र पर बृहत घोषणा कराई। विदेश यात्रा पैकेज टीसीएस दर को 5 ରୁ 20% कमाई 2% रखा, जहाँ शिक्षा चिकित्सा उद्देश्य LRS उपर लागू हो। इंटरेस्ट आम देखिए डीरेगुलेशन टा जो होची सेटा ओडिसा रे केमती रिफ्लेक्ट करछ, केमती सिंगल विंडो ऑपरेशन फॉर MSMEs मान को फायदा दउची। सेकंड होची आमे दाबी करी आसुचु क्लस्टर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओडिसा,
सेटा केमिति आमे लाभ पाइबे क्लस्टर भी से फोकस करिसेंती ओडिशा गवर्नमेंट क्लस्टर टाउ को बळी भाव में रूपायन दौरान। थर्ड होची कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स केतेटा डेवलप होची सो दैट एमएसएमई माने फायदा उठेबे आउ जो माने माइक्रो एंटरप्राइज अछंती कॉमन फैसिलिटी सेंटर टा निहाती दरकार आउ डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज जोटा एसएमई माने फायदा उठेई परिबे सेटा भी यूनियन बजेट रु से माने किछि अंश रे ताकू कन्वर्जेंस करिकि डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज को मध्य जदि से माने डेवलप करंती आ मदर यूनिट्स को डेवलप करंती एति ओडिसा रे ताहले निश्चित भाव में एम्प्लॉयमेंट बढ़िबो एवं एमएसएमई मान को ग्रोथ हो। थैंक यू। टैक्स उपरे हमर सीए अछंती Farmer to fisheries, then TCS reduction on tourism packages and TDS reduction. So all these positives are there. Market is reacting the way it is reacting every day. So that is, I don't see any correlation of market that has tanked down, that has gone down to the budget proposal. हिंदी में जानना चाहेंगे, बजट पेश किया गया है, क्या विशेष पॉइंट्स हैं बजट में? विशेष पॉइंट बजट का ये है कि ये बजट एक 2047 की दिशा पाथ की ओर बढ़ता बजट है। अगला 8 बजट जो निर्मला जी ने पेश किया है वो 8 बजट एक के बाद एक एरिया। आम साथ जोड़ी आयुर्वेदिक डॉक्टर जोड़ी वासुदेव वासुदेव प्रधान। डॉक्टर प्रधान, अखिल भारतीय संस्थान 3टा प्रतिष्ठा करा जिवो आज केंद्रीय बजेट रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण घोषणा करछंती। ये आयुष जति हमें कहबा को केते दूर गोटे बड़ बोझ दबो? निश्चित भाव में सदयोग पदक्षेप भारत हूँ आयुष रो चिकित्सा हूँ प्राचीन चिकित्सा जो तार मूल भूमि कहवा आद्य भूमि कहवा आज काश्मीर कन्याकुमारी चाहिदा रही कि विश्वव्यापी होगा जाऊँगी जोग जमी परिचित है एवं 3टी एम्स खोल तो स्वागत मैंने अन्य कंट्री आग्रह ना विश्व आम जापारे भारत लोग जापारे अन्य कंट्री मध्य चाहिदा बहुत रही किंतु नेशनल लेवल इन्स्टिट्यूट खोलिले प्रभाव अलग कारण समस्त मन धारणा रही एम्स जो खोलुची तार गोटे किसी गुरुत्व रही तेणु देखो दिल्ली में एम्स अच्छी आप खोलला दिल्ली में आयुष एम्स खोलला जामनगर खोलला तेणु जब विदेश में खोल स्वागत पदक्षेप आयुर्वेद समृद्ध हम जो आप आयुष चिकित्सार समृद्धि कारण ये गोटे पार्श्व प्रतिक्रिया विहीन विज्ञान इसमें कौन कुप्रभाव ना गोटे जीवन को सुस्थ सबल सुंदर कर रखापी रेझा को रखापी आयुष हूँ एकमात्र चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को लेकिन आम जो परिचय सृष्टि विदेश में आहरी आगू आगू बढ़ निश्चित भाव में स्वागत पदक्षेप। डॉक्टर प्रधान, ये जो घोषणा नुआ संस्थान गुड़िक जो हम ये आम देशर जो ग्रामीण और सहरांचल केते दूर प्रभाव पकेब? मैडम कहया कथा कौन कि आपंकर सहरांचल नहीं ग्रामांचल नहीं कोरोना पर समस्त आयुर्वेद मुहा युवकती मुहा तेणु लोक चाहूँ आम सुस्थ भाव में बंचू कारण बर्तमान विश्वर जो जलवायु भल ना तेणु अनेक रोगर संख्या बढ़ी विभिन्न प्रकार भिन्न भिन्न स्वास्थ्य समस्या आसूची तेणु सहर गाँ सबुठी आग्रह बढ़ लोक धारणा जे ग्रामांचल यार चाहिदा ना सहरांचल रही शिक्षित लोकों पाखे यार चाहिदा ता नुहे ग्रामांचल बंचिकी रही भारत भाया देश में ग्रामांचल लोक आयुर्वेद चिकित्सा को निर्भर कर रोचे कथा हूँ कौन आप सहर लोक शिक्षित लोक तो से मुहाई आयुर्वेद प्रति आम जो यार साइड इफेक्ट किसी ना ये ना सी ना से स्वतः आयुर्वेद को मुहाई कि यहाँ विदेश में गले कौन हम विदेश लोक चाहते आम ये आम कि निरोग बचू निरोग रू कौन करूँ तेणु ग्लोबाल हो गला कि सबुठ भल हम तेणु धनी गरीब किसी ना सहरांचल चलो ग्रामांचल भी चलो आउ ये विदेश को जाऊँगी मैंने गोटे इन्स्टिट्यूट गोटे कंट्रोल खोल मैंने से विश्वव्यापी है समस्त मुहाइबे से इन्स्टिट्यूट को आई 3टी अधिका हम तेणु प्रति कंट्री खोलवार आवश्यकता रही। डॉक्टर प्रधान, ये जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यार जो 3टी स्थापना हम ये आयुर्वेदिक शिक्षा तार गवेषणा आउ तार विकास को केते दूर सहायता माने सहायता दे परिबो?
से उदाहरण आपंकर श्रीलंकार आईलतर 50 वर्ष है सरकार आग्रह देखी से आम चिकित्सा को लोकप्रियता करने चाहिए तो बढ़ी तेणु आज केरल को नहीं विदेश लोक आस ट्रिटमेंट हाँपे तेणु से पहुंचे चाहिदा भयंकर ज्यादा बढ़ आज आयुर्वेद प्रति जो लोक मान धारणा था जन आयुर्वेद चिकित्सा भाई जो गोटे पक्ष मन करता गोटे आयुर्वेद पाठ पढ़ुचे से दूर हो कारण विदेश में जब यार चाहिदा बढ़ो आग्रह देश भर बढ़ो तेणु यहाँ गोटे भल पदक्षेप कहीं मुझे देखुची रिसर्च हम गोटे जगार आपंकर सिलेबस चलो विदेश पिला चाहिए नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आयुर्वेद जयपुर में जो राजस्थान रही विदेश पिला पाठ पढ़ुं कोर्स पढ़ाई आसुँच रिसर्च चली तेणु यहाँ गोटे ग्लोबाल है भल कारण भारतीय लोक मान गोटे विदेश मानसिकता रही हेल्थ सेक्टर को केते दूर सुदृढ़ करिवो डॉक्टर प्रधान निश्चित भाव सुदृढ़ कर आपंकर सुस्थ जीवन यापन केवल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान गोटे गोटे आयुध नुहे गोटे सुस्थ सबल निरामय जीवन यापन आधुनिक चिकित्सा सहित आपंकर आयुष चिकित्सा आवश्यक आयुर्वेद आवश्यकता रही आम कंसेप्ट जमी आप आयुष सिस्टम जोड़ी दि जाए एलोपैथ मॉडर्न सिस्टम सहित मेडिकल कॉलेज में से खोलला मैंने आगे बहुत आगुआ आधुनिक चिकित्सा ना तेणु से कंप्यूटर हो मुहाइम चिकित्सा से बहुत मॉडर्न साइंस आगुआ अच्छा आयुर्वेद से पहुंचला आयुर्वेद कौन कौन रिसर्च तुलसी गोटा कौन खंडा काश तो अधिक गवेषणा कर कहीं यूज होती हल्दी गोटे आप आंटीसेप्टिक कहीं निहाई बहुत आगुरी तेणु रिसर्च हो पार बहुत मैंने विदेश लोक मैंने ब्लाइंड नियंत्रण हूँ रिसर्च गोटे अनुशीलन कर मानसिक रही बढ़ी पार आयुर्वेद बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रधान आम साथ रही आयुष डाक्तर रही डॉक्टर वासुदेव प्रधान एवं जो भाई 3टी नुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद स्थापना ने घोषणा करा कंसंट्रेट पुनः किया गया है। फार्मिंग की अगर बात करें उसमें जिस तरीके से डाइवर्सिटी को एक्नॉलेज किया गया है, नहीं तो आप उसी को एक ही उत्पादन बार बार रखने की भी समस्या सरकार के पास इवेंचुअली होने लगेगी। तो कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए कोकोनट, कोको, इन तमाम चीज़ों को जिस तरीके से बजट में रिकॉग्नाइज किया गया है, फिशरीज़ को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके उस सेक्टर को एनहांस करने की बात हो, मैं मानता हूं कि ये 47 विकसित भारत के निर्माण के लिए उसकी एक मजबूत नींव को तैयार करने वाला एक बहुत ही विजनरी बजट है। और इसकी खासियत ये भी है कि 9वीं बार वित्त मंत्री जी ने इस बजट को पेश किया है। खासियत तो ये है कि उन्होंने 9वीं बार किया है, बट एक ही प्रधानमंत्री के अंदर उन्होंने 9वीं बार किया है। ये कंटिन्यूटी दिखाता है, स्टेबिलिटी दिखाता है सरकार की सोच में, सरकार की नीतियों में, जो कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी हमारी पहचान को मजबूत करता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने मजबूती देने की इसमें बात की है और ईज़ ऑफ बिजनेस के साथ साथ ईज़ ऑफ लिविंग पे इस सरकार का, हमारी सरकार का बल रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस का जिक्र मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते रहे और रिफॉर्म्स के माध्यम से जितना सरलीकरण हो सकता है सिस्टम का, वो करने का प्रयास किया। आज के बजट में भी आप देखें जिस तरीके से पहले के बजट और आज के बजट में समझने के लिए ज़्यादा था, चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही थी। पार्ट ए पार्ट बी जिसका जिक्र मैं सुबह से कुछ न्यूज़ चैनल पे भी सुन रहा हूँ, जिस तरीके से उसको भी इक्वली बैलेंस किया गया है ताकि सही में जो टेक्निकल पक्ष भी है उसको भी जनता तक सही ढंग से पहुंचाया जाए। तो मैं मानता हूं कि ओवरऑल ये 2047 को मद्देनज़र रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया और इसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ से माननीय वित्त मंत्री साहिबा का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। क्या बोलना चाहेंगे? युवा of time. Thank you. होने वाला है कंटेंट क्रिएटर्स के आत्मसम्मान का ये बजट है और उनको रिकग्नाइज़ किया गया है। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट है। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, महिलाओं को भी ट्रेन करने के लिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई है। पहली बार किसी बजट में मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी दिया गया है। मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट का निर्माण किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली ये बहुत ही रोबस्ट बजट है, होलिस्टिक बजट है और आने वाले समय में जो बोल्ड रिफॉर्म्स का हम लोग बात करते हैं, समाज के इंक्लूसिविटी का बात करते हैं, ये बजट उसकी जो नींव है उसको रखा है।
लेकिन जैसे ही मैम का स्पीच खत्म होता है, निर्मला मैम का जो सेंसेक्स है 2000 पॉइंट नीचे चला आता है, इसको आप कैसे देखते हैं? ऑल ऑफ सडन मैम जस्ट लास्ट 2 days रू वेबसाइट भी आरंभ हो जाइए। सो डिस्प्यूट विल बी नाउ छोटो टैक्स पेयर को हाईकोर्ट जीवा को पड़ो नहीं एंड दे कैन रिजॉल्व इन ट्राइब्यूनल विथ वेरी लो एंड मिनिमम कॉस्ट। So income tax point of view and GST point of view and custom, lot of rates transformation and tobacco industry रे गोटे transformation from today implement करा है। As you asked me earlier, what was most important is fiscal. शुणुले बजेट आसवा पर प्रतिक्रिया विभिन्न क्षेत्र आसबार लगी सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ जो कथा सामना को आसूची जे ओडिशा को एथिरे जो केतोटी घोषणा करा सीधा सड़क ओडिशा को जो फायदा पहुँचब जो कथा आपण मैंने टीवी स्क्रीन में देखिपुंट ओडिशा जो भाव में जो विरल खनिज कॉरिडोर बा विरल मृत्तिका कॉरिडोर जो प्रथम थर भारत में प्रतिष्ठा होगापाई जाऊँगी केरल आंध्र ओडिशा को लेकिन ओडिशा यह द्वारा विशेष भाव में लाभान्वित होगाकू जाऊँगी। एवं द्वितीय कथाटी जो अर्थमंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण घोषणा करिसेंती जे राष्ट्रीय जलमार्ग धामरा एवं पारादीप बंदर सहित जो खनिज अंचल गुड़िक रही ओडिशार से खनिज अंचल गुड़ी को जोड़ा खास कर रोचे तालचेर अनुगुल जो खनिज अंचल रोचे जलमार्ग अर्थात नदी पथ देकी पारादीप एवं धामरा सहित जोड़ा अर्थात जो रोड ट्रांसपोर्ट रे ट्रैफिक से अधिक खर्च आसूची अति सहजरे कम समय एवं बिना ट्रैफिक जाम रे खनिज पदार्थ सीधा सड़क पारादीप एवं धामरा बंदर पर्यंत पहुंची पारिबो। कलिंगनगर एवं अनुगुल तालचेर सहित पारादीप एवं धामरा को जोड़ा जावा ये गोटे बहुत बड़ा पदक्षेप। ये वर्तमान जदिओ कथा नुहे किंतु एटी घोषणा करा जायछि स्पष्ट भाव में बजेट रे मोदी सरकार आसवा परठारु या उपरे काम आरंभ करथिले एवं घोषणा होइतिला से नेकी सर्वे मध्य करा जायतिला किंतु काम जदिओ चूड़ांत रूप नहीं पारि नाही किंतु ए बजेट रे स्पष्ट भाव में घोषणा करा जायछि जदि एटा होउछि ताहले एटा ओडिशा पाई बहुत बड़ा गोटे लाभ कहा जाय परिबो कारण अनेक एकाधिक लाभ या द्वारा मिल। प्रथम कथा जो खनिज ट्रांसपोर्ट होउछि बा परिवहन होउछि बंदर गुड़ी को एवं सड़क मार्ग रहबा द्वारा बहु परिमाण में ट्रैफिक जाम होउछि एवं ट्रक गुड़ी व्यापक भाव में चलाचल करबा द्वारा ट्रक हो बा ट्रेन हो एवं ट्रेन रूट गुड़ी बिजी रोचे खास करी राजमार्ग रे जो परिवहन होउछि राजमार्ग रे परिवहन हवा द्वारा अधिक समय लगुछि एवं या द्वारा परिवेश प्रदूषण होउछि ट्रैफिक जाम होउछि दुर्घटनार आशंका बढ़ुछि खर्च अधिक रोचे किंतु जल मार्ग रे जदि ये परिवहन हम या द्वारा अनेक फायदा मिलिबो। एक तो कम समय मध्य पहुँचब रोड जाम हम ना सस्तार पहुँचब कम खर्च हम परिवेश प्रदूषित हम ना। तो ये बजेट रे घोषणा करा जायछि स्पष्ट भाव में जो 5टी जलमार्ग विषय घोषणा करा जायछि एवं ता भितर ये होउछि रहिछि गुरुत्व वहन करुछि धामरा एवं पारादीप सहित खनिज पदार्थ भरा जो अंचल गुड़िक रही ओडिशार ताकू संजोग करा जलमार्ग माध्यम रे एवं से भली भाव में विरल मृत्तिका कॉरिडोर जो स्थापन करा जाउछि केरल आंध्र ओडिशा ए राज्य गुड़ी को लेकिन जो कॉरिडोर स्थापन हवा एवं से कॉरिडोर रे ओडिशा जेहेतु आसुछि एवं से क्षेत्र में मध्य ओडिशा बड़ा लाभान्वित हवाकू जाउछि। एवं सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि जे अनेक गुड़िए जो भली भाव में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सेमीकंडक्टर 2.0 को लॉन्च करा जायछि एवं आपण जानि छंती जे ओडिशा रे सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अनेक गुड़िए पुंजीनिवेश होइछि एवं जेतेबेले एकू लॉन्च करा जायछि सीधा सड़क ओडिशा या द्वारा लाभान्वित होगाकू जाउछि। प्रथम थर पई 3टी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा नहीं घोषणा करा जायछि जेमती जो ढांचार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अच्छी एम्स अच्छी जार गोटे शाखा भुवनेश्वर में रही एवं से भली भाव में देश में 3टी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा करा अर्थात आयुर्वेद को गोटे बड़ मान्यता या माध्यम मिलवा जाउछि एवं आयुर्वेद को नहीं ओडिशा जो भली भाव में मेडिकल टूरिज्म क्षेत्र में गोटे बड़
डेस्टिनेशन बनी सारी आगु को आहरी बनवा जाऊँ जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रतिष्ठा जाऊँगी आहरी बड़ प्रोत्साहन कर आयुर्वेदर प्रचार प्रसार दिगरे बहुत बड़ पदक्षेप एक कहुपर तो अनेक गुड़िया घोषणा करा जायछि। तो टिकेस कथा जो देखा डायरेक्ट टैक्स कथा जो देखा जो कि इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स रे अनेक गुड़े रिहाती जदिव गत बजेट रे बहुत बड़ा बंपर रिहाती देखा मिलता है एथर टैक्स रे भी रिहाती खासकर वरिष्ठ नागरिकों कथा जो देखा वरिष्ठ नागरिकों को बजेट रे टैक्स रिहाती मिली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन रही जो परिमाण थिला सेटा को 1 लाख टंका को वृद्धि कर दिया जायछि। स्टैंडर्ड डिडक्शन रो परिमाण को 1 लाख टंका को वृद्धि करा जायछि आ शिक्षा ऋण एवं 10 लाख टंका पर्यंत वैदेशिक अर्थ प्रेरण उपरे लागिबो नाही कोनोसी टैक्स अर्थात जो माने विदेश रे शिक्षा नवा पाई चाहूचंती तांका पाई ये गोटे बहुत बड़ा रिलैक्स एठी कहा जाई परिबो। टैक्स क्षेत्र रे दुईटी निजस्व संपत्ति क्रय उपरे टैक्स रिहाती रही जो माने संपत्ति क्रय करुछंती एवं सेठी जो टैक्स लागुथला पूर्वरु सेटा कमे दिया जायछि तो यह द्वारा अधिक किणा बिका हो पार यह द्वारा लोक मान को प्रोत्साहित कर रियल इस्टेट सेक्टर को सीधा सड़क भाव में प्रोत्साहित कर टिकस रिटर्न फाइलिंग समय सीमा 4 वर्ष को वृद्धि कर दिया जायछि। वार्षिक 12 लाख पर्यंत आय उपरे कर संपूर्ण छाड़ एवं 12 लाख पर्यंत एवं तापर जदि 75,000 जो डिडक्शन करा जायछि एवं ताकू मिसई देले 12,75,000 पर्यंत कौन टैक्स दबाकू पड़िबो नाही जो माने 12,75,000